whether to take the second new ball, whether not to, how far to bring the field in, how far to protect the boundaries. How did you go about it? When you have got bowlers like Siraj and Prasid bowling that spell, captaincy seems pretty easy. Bowling a spell doesn't really, ball is doing all sorts, they're making the ball talk. Yes, there was a little bit of pressure on us, but I think the way we responded this morning with them coming through with this spell was just magnificent for us. And were you always confident that you could win that game this morning? Were you concerned that the break last night with another heavy roller on the pitch would have played to England's advantage? No, I think, we were pretty confident. Even yesterday, we knew that they are a little bit under pressure. We just wanted to make sure that they're feeling the pressure throughout. Pressure makes everyone do things that they don't want to, and we just wanted to make sure that they're feeling the pressure throughout the 37 runs that they scored. Tell us a little about captaining Mohammad Siraj. He looks like a captain's dream. Yes, definitely. He's a captain's dream. Coming in 5 test matches, every ball, every spell that he pulled gave us all out, and every captain, every team wants a player like him. We are very fortunate to have him in that team. And do you think 2-2 is a fair reflection of the cricket played between the teams? Yeah, most definitely. Like I said, both the teams coming on day 5, never really knowing which team is going to win. This shows that how passionate both the teams were, and how much of a good cricket both the teams played throughout the series. Talk about your own performance, if we can, for a moment, because it's partly an individual award as well. You said at the start of the series you wanted to be the best player you could be. You've achieved that this summer. Feels very rewarding to be able to achieve that. I worked very hard before the start of the series. There were certain things that I wanted to work on as a batsman, and it was my goal to be able to be the best player at the series, and to be able to accomplish that goal feels very satisfying and very rewarding. You've had plenty to prove coming here, and you said you wanted on certain things. Were the changes technical or mental or a combination? Always both, always a combination of both. I think once you are sorted mentally, you would be in a good space, but you're only sorted mentally when you're feeling technically correct. So I think they're both kind of correlated. If you feel like you're getting in good positions, you're always mentally more stable. An amazing series. What have you learned about yourself and your team over the last 6 weeks? That we never give up. Well done. Congratulations. Thank you. And now for a few words, will you please welcome up England's series captain, Ben Stokes. Ben, a tough one to watch, given all that you've contributed in the 4 test matches earlier in the series, but not able to here. Yeah, it's obviously always difficult when you can't participate in a game. Another hard-fought game, down to day 5. Like, both teams have put so much energy and effort into this whole series. It's been an amazing one to be a part of. But yeah, obviously, bitterly disappointed. But yeah, a series that I'm very proud of my team, of everything that they've thrown into this. We obviously would have loved to have come away with the series win, but it wasn't meant to be. The ultimate drama in the end, really, with Chris Woakes, who made his debut here a dozen years or so ago, walking down the stairs with his arm in a sling. Just tell us about that decision, whether he had to be pushed through the door or whether he's putting his good arm up to volunteer. Yeah, no, I don't think, obviously, when it got to the situation it did, there was never a question in Woakes' mind about what he was going to do. He actually spent yesterday trying to figure out which way round, if he had to face off, he was going to be left or right-handed. I think, look, we've had guys go out with broken foots, we've had guys go out with broken fingers, and we've had guys go out with dislocated shoulders. I think it shows what it is to play for your country and try and win games for your country as well. But yeah, again, like, just such a hard-fought series for both teams, and myself, and I'm sure Shubman as well, is very proud of what their team have contributed towards us. Yeah, I wanted to ask about the series as a whole, because it's been a spicy series, but I don't think any of the worse for that from a viewer's perspective. What's it been like to play in? Yeah, it's been awesome. India, England's always a massive series. There's always going to be moments where emotion comes out from both sides, in particular when you get to a stage of the game where almost the game's on the line. And I've said it a few times before, I don't think any of my lads are going to sleep crying over what was said, and I don't think any of the Indian players will be going to bed crying over what was said either. And I think it just shows that the passion and the desire that everyone who walks out representing their country with their nation's flag on their chest means. And you as a player, back to your best now as a genuine all-rounder, is that how you see it? Yeah, felt good. Obviously,
really happy with how it went with the ball. Everything, all the niggles and stuff from all those years ago. Under the knife a few times. Hopefully, are all behind me. Obviously, able to go out there and fulfill that role that I have done over the years. But yeah, obviously, very disappointed to miss out on this game and not be able to contribute. Rehab starts now, and obviously, we've got the big one coming up after this soon. Yeah, you don't play now Test cricket until November. Big one, as often taught in the past, sit-out games through injury, that you look on from the sidelines, effective about your team this week. That maybe pleased you. Was there anything that concerned you? I think, pleasing is great. When one of the bowlers goes down so early on in a game, the whole, the sort of role of those three seasons completely changed from the selection we went with. And even our second innings with the ball, the heart and the desire that the three big fellas kept on running in with and putting into the team, for the team, was outstanding. You can look back on a 5-day game, with many different moments and go, oh, well, if this had happened, if that had happened, but that's why cricket is so good, it's why we play sport. But all we ask for, me and Brendan, from the guys who get lucky enough to be selected in the 11, is that you leave everything out on the field. Not an ideal situation when one of your frontline bowlers goes down, but that heart and desire that Tungi, Gus and Jamie showed for the team was super outstanding. The Graham Thorpe headband medal there. The last Ashes tour, which Thorpe was a part of the coaching staff, didn't go that well. Are you confident that the players under your command now will give it a good run when we do see you in Test cricket for the next time in November? Absolutely. Well done. Congratulations. Thank you. एग्जैक्टली हुआ था 4 साल पहले जब इस सीरीज की हुई थी बराबरी, तब इंग्लैंड 2-1 से पिछड़ते हुए 2-2 से बराबरी करते हुए नजर आए थे। 25 साल के कप्तान ने बिना अपने सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैटर के, बिना अपने सर्वश्रेष्ठ स्पिनर के पिछले दशक के, बिना अपने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के और बिना टेस्ट क्रिकेट के अपने सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर बैटर के अपने पेस गेंदबाजों से लगभग 77-78 ओवर का संकल्प मांगा। उन्होंने वो परफॉर्मेंस दिलाई और इसीलिए ये ट्रॉफी अब शुभमन गिल के सामने है आई। बेन स्टोक्स जानते हैं कि मौका उनके पास भी उतना ही था जब लॉर्ड्स का टेस्ट मैच जीता था, 2-1 की बढ़त ली थी, लेकिन शुभमन गिल की इस टीम इंडिया के इरादे बुलंद थे। लॉर्ड्स में एक कमाल का रियर गार्ड एक्शन, जहां पे ओल्ड ट्रैफर्ड में लगभग 5 सेशन बैटिंग करके वो टेस्ट मैच ड्रॉ किया और उसके बाद इस टेस्ट मैच को जीत के इस सीरीज को बराबरी पे ला खड़ा किया। 2007 से इस सरजमीं पे सीरीज जीती नहीं है, लेकिन ये ड्रॉ एक जीत से कम नहीं। बेन स्टोक्स को मेडल उठाएंगे, वो मौके की तरफ देखते नजर आएंगे जो एक नहीं, 2 नहीं, कई बार आया है, लेकिन शुभमन गिल जानते हैं कि उनके कद में बतौर एक टेस्ट बैटर, एक टेस्ट कप्तान बहुत उछाल, बहुत उत्थान आया है। बहुत सारे सबक इस सीरीज में, नो डाउट, लेकिन उस सभी के बीच में शुभमन गिल ने बता दिया कि वो पढ़ने आए हैं, वो सीखने आए हैं, वो सिखाने भी आए हैं। 2-2 से सीरीज पे बराबरी शुरुआत हुई 224 के स्कोर से जो भारत ने बनाया। टॉस जीता था इंग्लैंड ने, किया था गेंदबाजी का फैसला, में डाला था भारतीय टीम को। करुण नायक का शतक उसमें फिर 247 के रूप में जब यानी बढ़त सिर्फ 23 रनों की थी, उसमें दानिश प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज जिन्होंने 4-4 विकेट लिए। फिर इन रिस्पॉन्स जो 374 का लक्ष्य दिया, 301 पे 3 की एक समय इंग्लिश टीम, फिर हैरी ब्रूक का विकेट मिला और फिर तीसरा सेशन एक ऐसा आया चौथे दिन के खेल में जो कि सब कुछ बदल गया और दे गया हमें the greatest fight back की स्टोरी। चेहरे पे मुस्कुराहट, भारतीय फैंस को राहत। We only believe in सिराज भाई। सिराज भाई ने जो किया था उसकी वजह से वो उम्मीद जागी थी, अब उसे एक जीत में तब्दील the greatest fight back में बदलते हुए देख जो बुझ गए वो सारे के सारे चिराग थे। ये रोशनी है, हवाओं का बस नहीं। शुभमन गिल बहुत सारा कॉन्फिडेंस लेके अब अगली हर सीरीज को अप्रोच करेंगे। कुछ ऐसे पल होते हैं जो हम हमेशा याद रखते हैं। ये 35 रन, ये 4 विकेट, कुछ ऐसे पल दे गए हमें।
ये सीरीज से अब तो एक क्वेश्चन उठ जाएगा कि कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि शुभमन गिल क्या कप्तानी कर सकते हैं कि नहीं भारतीय टेस्ट टीम की। अब यहाँ से एक चीज जरूर होगी कि आप किस तरीके से अब इस टीम को और आगे लेके जा सकते हैं। इसके चलते जो ये फेस चल रहा था उसमें बहुत जरूरी था कि भारत को कुछ इस तरीके का रिजल्ट आए। हालांकि 2-2 है, लेकिन मुझे लग रहा है कि भारत उससे भी बहुत ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेली है। बट एट द एंड ऑफ द डे हम नंबर्स की तरफ और ऐसे स्पोर्ट की तरफ देखते हैं कि जहाँ पे वो मायने वही रखता है कि आखिरी में कौन जीता है। तो इसके लिए जिस तरीके से भारत ने क्रिकेट खेला, इस तरीके से जब भी पुश किया गया था, कैसा लग रहा था कि भारत यहाँ से अब टेस्ट मैच जीत ही नहीं सकता या वापसी नहीं कर सकता, तो हर बार वो सबसे बड़ी चीज थी कि वो लड़त दिखाई। लेकिन जब आप लड़ते रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से वो रिजल्ट मिल जाता है। और मैं जो काफी टाइम से ये चीज कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में भारत को वो रिजल्ट नहीं मिले थे, वहां पे भी वो उसी बेहतर क्रिकेट वहां पर भी खेले थे। और इस टीम को गौतम गंभीर द कोच जिस तरीके की सोच है उनकी, उनको वो चाहिए था कि कहीं से वो रिजल्ट मिले। लेकिन जब रिजल्ट मिलता है तो फिर आपकी वो सोच को ना आप वैलिडेट करते हो, क्योंकि अब अलग अलग चीजें होंगी। ऑब्वियसली आप सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं। जिस तरीके से गंभीर और शुभमन ने यहाँ पर ये सोचा था कि हम एक एक्स्ट्रा बैटर के साथ पूरी सीरीज खेलेंगे, सबके लिए वो क्वेश्चन था। चाहे काफी लोग, बहुत सारे लोग जैसे हम लोग उस चीज से शायद ऐसा मान नहीं रहे थे कि शायद भारत वो थोड़ा सा डिफेंसिव सोच के साथ जा रहा था। लेकिन वो जरूरी है कि ड्रेसिंग रूम क्या सोच रहा है। कि वो ड्रेसिंग रूम ये सोच रहा था कि हम इस प्लेइंग 11 के साथ से अब मैच जीत सकते हैं, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। और यहाँ पर इसीलिए आपको इस तरीके की चीजें नजर आती है, खास करके जिस तरीके की थिंक टैंक है, वो थिंक टैंक है, जिस तरीके से वो सोचते हैं वो बहुत मायने रखता है। मोहम्मद मौकल के बारे में बहुत क्वेश्चन है, रायन टेंडुलकर, सिद्धांशु कोटक जो अभी भी वो इंडियन टीम के कोच बने, और इन सब के लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा मैटर कर रही थी, क्योंकि बहुत कुछ लाइन पे था। और इन सब ने जो बहुत बड़ा किरदार था वो मोहम्मद सिराज का था। और यहाँ पर ये सपोर्ट स्टाफ, बहुत सारी चीजें हैं कि बहुत लोग हैं इसमें। टीम भी फील्डिंग कोच भी नजर आ रहे हैं, रघु भी नजर आ रहा है, डॉक्टर भी नजर आ रहे हैं, सारे लोग हैं कि एक्चुअली में क्यों इनके मायने बहुत होते हैं। जो दोनों फिजियो है, योगेश और कमलेश, इनका रोल भी बहुत ज्यादा है। इन सबको फिट रखने में ये जो पीछे जो ब्लू टी शर्ट में थे लोग थे, उनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और डेटा एनालिस्ट बहुत लोग हैं, जैसे 15-17 लोग वहां पे जाते हैं, उसके साथ साथ 15 भाई फिट रखते हैं। योगेश और कमलेश दोनों, योगेश भाई और कमलेश दोनों का नाम दिया, क्योंकि 1000 बॉल डाले मोहम्मद सिराज। तो जिस तरीके से वहां पर आपने खड़ा किया, ऋषभ पंत को फ्रैक्चर था, वहां पे उनको खड़ा कर दिया आपने भेजने के लिए, वो सब रोल प्ले होता है। तो बहुत चीज होती है कि देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड सपोर्ट स्टाफ।